In fiber optics chapter, today's topic is numerical aperture. Students, numerical aperture is one of the important concept or one of the important parameter in fiber optics. So here we will see what is numerical aperture. So the numerical aperture of an optical fiber is a measure of amount of light that can be accepted by the fiber, or numerical aperture is the light gathering capacity of an optical fiber. तो ये न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है? मीन्स वो जो फाइबर है वो कितना लाइट कलेक्ट कर पाता है, या हाउ मच इज द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर is determined by numerical aperture. So this numerical aperture we can find out by using acceptance angle. यहाँ पे जो acceptance angle रहता है, by that angle we can find out numerical aperture. And formula for this numerical aperture is also in terms of acceptance angle. Here numerical aperture is equal to sine of theta a. If mu1 is refractive index of core and mu2 is refractive index of cladding, then numerical aperture is equal to inside the square root mu1 square minus mu2 square. Or here we can write formula like this: sin theta a is equal to square root of mu1 square minus mu2 square. So by this formula we can find out acceptance angle. Now here we will derive one derivation. एक छोटा सा derivation है न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला के लिए, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे. So this derivation is for fractional refractive index change. This fractional refractive index change is defined as the fractional difference between the refractive indices of the core and cladding. मतलब कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है उसको ही हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज. एंड बाय यूजिंग दैट वी विल फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल एपर्चर. So here, so this fractional refractive index change is written in this way: delta is equal to mu1 minus mu2 upon mu1. और यहाँ पे mu1 और mu2 क्या है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है. mu1 is refractive index of core and mu2 is refractive index of cladding. So mu1 is always greater than mu2. वो भी हमने एक वीडियो में देखा है कि mu1 का वैल्यू is always greater than mu2, then only total internal reflection is possible. तो total internal reflection का जो concept है उसमें ये clear है. And that's why value of delta is always less than 1. मतलब ये value हमेशा 0.0005 like this रहती है. अभी इक्वेशन ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर जो हमने पहले लिखा था वही यहाँ पे लिखा है. न्यूमेरिकल एपर्चर इज इक्वल टू इनसाइड द स्क्वायर रूट mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर. तो यहाँ पे जो mu1 एंड mu2 है उसमें बहुत ही स्मॉलर डिफरेंस है. एंड दैट्स वाई वी कैन राइट mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू 2 mu1. mu1 और mu2 ये दोनों कैसे हैं? नियरली इक्वल है. एंड दैट्स वाई वी कैन राइट mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू 2 mu1. So here means we know numerical aperture, that equation we have written in this way: mu1 square minus mu2 square ही हम कैसे लिख सकते हैं? mu1 plus mu2 and in another bracket mu1 minus mu2. So here instead of mu1 plus mu2 we can write 2 mu1 and mu1 minus mu2 वो वैसे की वैसे रहेगा. Now in this step multiply by mu1 and divide by mu1. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय mu1. तो यहाँ पे mu1 माइनस mu2 का मतलब क्या हो जाएगा? ये डेल्टा है. mu1 माइनस mu2 अपॉन mu1 क्या है? दिस इज डेल्टा और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज. सो हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ दिस एंड देन फॉर्मूला बिकम्स लाइक दिस: 2 mu1 मल्टीप्लाइड बाय mu1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा. अभी यहाँ पे देखो mu1 मतलब mu1 स्क्वायर. So we can take it out of the square root and we can write it as a mu1 and inside the square root 2 delta.
So here this is the formula for numerical aperture in terms of fractional refractive index change or fractional refractive index difference. That is mu1 inside the square root 2 delta. Okay. So importance of numerical aperture is that a large value of Na means optical fiber will accept a large amount of light from the source. अगर न्यूमेरिकल एपर्चर किसी फाइबर का ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मीन्स इट कैन एक्सेप्ट और इट कैन कलेक्ट लाइट बाय लार्ज अमाउंट. और सेकंड इम्पोर्टेंस है एन ए डिटरमाइंस द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर. उसका कैपेसिटी कितना है वो भी हम न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट न्यूमेरिकल एपर्चर. ओके, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप लोग शेयर करो, लाइक करो. थैंक यू.